हेलो। बेटा आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। बेटा आवाज आ रही है? हेलो। आकाश श्रीवास्तव आवाज आ रही है? हेलो आकाश श्रीवास्तव। आकाश श्रीवास्तव आवाज आ रही है? आकाश श्रीवास्तव बेटा आवाज आ रही है? हेलो हेलो बेटा आवाज आ रही है? हेलो nobody is responding. हेलो यस सर। आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। Okay. So today we will discuss about distance signature. Yes, I'm just sharing you the file. Just wait. मेरी आवाज सभी को आ रही? क्लियर? यस सर। ओके। Okay, so I have shared you a file. एक फाइल शेयर किया, दिख रहा है सभी को? हेलो, फाइल दिख रही है सभी को डिस्टेंस सिग्नेचर की? हेलो यस सर। बेटा, फाइल दिख रही है सभी को? यस सर। Okay, so we are just talking about the discuss signature in cryptography. This is another topic clear that we will cover in this lecture. So if we talk about the digital signature, so इससे पहले हमने आपको सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी पढ़ाया था, ठीक है? एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पढ़ाया था और उसमें हमने आपको ये बताया था कि कैसे कोई भी प्लेन टेक्स्ट होता है उसको हम लोग इंक्रिप्शन के थ्रू और की अप्लाई करके हम कैसे साइफर टेक्स्ट अचीव करते हैं। देन इनके सेंडर साइड पे जब वो रिसीवर पे जाता है तो कैसे वही सेम
मैसेज हमारा डिक्रिप्ट होके हमको मिल जाता है, ठीक है ना। सेम की से उसको हम डिक्रिप्ट करते हैं, जो कि हमारा सिमेट्री की एल्गोरिथम में होता है। सेंडर और रिसीवर सेम की को शेयर करते हैं इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए मैसेज। और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में हमने आपको बताया था कि कैसे जो सेंडर होता है वो रिसीवर्स की पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट करता है, और जो रिसीवर होता है वो प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करता है। क्लियर। सो अब हम इसी टर्म पे बात करेंगे अगली सिक्योरिटी मैकेनिज्म की, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर ऑल्सो आप सभी को पता है कि जैसे कोई भी हम लोग आज के टाइम पे सिग्नेचर की कितनी वैल्यू होती है इफ यू ऑथेंटिकेट एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। क्लियर। लाइक एनी फाइनेंशियल you can say like check activity, if you share any if you want to pay somebody with your check, so your signature is essential. Clear. And your signature is verified by the bank also, that it is genuine person or not. Clear. So उसके बेसिस पे आपका ट्रांजेक्शन दूसरे को आपका प्रोसेस होता है। क्लियर। चेक के थ्रू। तो वही चीज हमारी, वो तो हमारा एक मैनुअल प्रोसेस हो गया। And in the today's scenario, digital signature is used for the basically to achieve the cryptographic process. Clear. So to achieve the confidentiality, to achieve the integrity, we just require the digital signature. Clear. So कोई भी डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड पे, तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर। इसमें की आपकी अप्लाई होती है डिजिटल सिग्नेचर में। एक अभी हम लोग आज छोड़ेंगे हैश फंक्शन। हैश फंक्शन में हम लोग को की जरूरत सच वैसी कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारा क्रिप्टोग्राफी में डिजिटल सिग्नेचर है, दैट इज इनक्रिप्टेड विद द हेल्प ऑफ की एंड डिक्रिप्टेड विद द हेल्प ऑफ की। क्लियर। सो वी जस्ट नीड टू फोकस अपॉन द डेफिनेशन पार्ट इनिशियली। क्लियर। सबसे पहले हम थोड़ा डेफिनेशन पार्ट इसका देख लेते हैं। आई थिंक यू ऑल आर getting my voice properly. Hello, you all are getting my voice properly. Okay, so let me start. I think okay, so digital signatures are the public key primitives of the message authentication. In the physical world, it is common to use handwritten signatures on handwritten or typed messages. Clear. सो जो हम लोग कॉमनली आज के समय में यूज करते हैं, दैट इज हैंड रिटन सिग्नेचर, और टाइप मैसेज पे जो भी हमारा सिग्नेचर है उसी से हम उसको डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करते हैं। क्लियर। सो एक जरा से पब्लिक की प्रिमिटिव है मैसेज ऑथेंटिकेशन का डिजिटल सिग्नेचर। दे आर यूज्ड टू ब्लाइंड या बाइंड सिग्नेटरी टू द मैसेज। क्लियर। Similarly, a digital signature is a technique that binds a person of the entity to the digital data. Yeah. So this binding can be independently verified by receivers as well as any third party. Clear? So जो भी ये बाइंडिंग है, ये जो हमारी मैसेज में हो रही है, दिस इज इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करा जाता है रिसीवर किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू। क्लियर। सो it is a cryptographic value basically that is exactly calculated from the data and a secret key that is known only by the signer. Clear. So साइनर को ही पता होता है उस की के बारे में। क्लियर। जो भी उसको इंक्रिप्ट करता है। एग्जैक्टली इन रियल वर्ल्ड द रिसीवर ऑफ द मैसेज needs assurance that the message belong to the sender and he should not be able to repudiate the origination of that message. So जो रिसीवर होता है मैसेज का, उसको एक एश्योरेंस चाहिए कि दैट मैसेज जो भी आया है हमारे पास वो सेंडर ने ही भेजा है। क्लियर। एंड उसको वो रिप्यूडेट नहीं कर सकता है, एबल नहीं है रिप्यूडेट द ओरिजिनेशन ऑफ द मैसेज।
को करने के लिए. So this requirement is very crucial in business applications since likelihood of a dispute over exchange data is very high. Yeah. So if we talk about the model of the digital signature, you can see this is the model of the digital signature. So I think it is visible to all of you now. So if you see, we have just want to okay. So now the size is very much optimized. So if you see what I am talking about, this is exactly the processing diagram, how the data may get processed through digital signature. Clear? So if you see this diagram, we have a signer and we have a verifier. Clear? So signer के through हमारा data exactly process हो रहा है, मतलब एक तरह से sender end है वो, जहाँ से data हमारा initiate हो रहा है. Clear? और receiver पे उसको हम verify करना है. Clear? So आप देख सकते हैं साइनर ने क्या किया है. Signer just have the data that is applying with the hashing function. उस पे हमने एक hash function apply किया है. We are just applying a hashing function. Then we are getting the hash data. उसके बाद हमको hash data मिल रहा है. ठीक है. Hash data मिलने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, signature algorithm उस पे apply कर रहे हैं. ठीक है. और जो भी algorithm है, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं जो hash data मिल रहा है और हमारे जो प्राइवेट की अप्लाई हो रही है साइनर्स की, जो साइनर उसको जिस प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर रहा है एग्जैक्टली, देन इट इज हैविंग, तब ये हमारा एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद वी आर गेटिंग द डेटा एंड द सिग्नेचर एट द सेम टाइम. ठीक है. सो हमारे पास डेटा भी है जो कि अपेंड हो रहा है उसके साथ, और वी हैव द सिग्नेचर ऑल्सो. उसके बाद ये ब्लॉक में हमारे पास दोनों चीजें एक साथ आ जा रही हैं, डेटा और सिग्नेचर. देन डेटा को वेरीफायर क्या करेगा, वेरीफायर साइड पे डेटा हमारा हैशिंग फंक्शन के थ्रू जाएगा जिससे हमको हैश मिलेगा, हैश वैल्यू मिलेगी. हैश एग्जैक्टली आपका क्या है, हैश एक मैसेज डाइजेस्ट है, एमडी जिसको बोलते हैं, या आप ये कह सकते हैं ये एक डेटा है. ठीक है. ये डेटा का ही पार्ट है बट सिक्योर्ड होता है थोड़ा सा इनक्रिप्ट होने के बाद. ठीक है. तो हमको यहाँ पे हैश डेटा मिल रहा है. ठीक है. हैश फंक्शन के बाद बाकी जो सिग्नेचर है इट इज जस्ट अप्लाइंग टू द वेरिफिकेशन एल्गोरिथम. जैसे यहाँ सिग्नेचर एल्गोरिथम था वैसे यहाँ वेरिफिकेशन एल्गोरिथम है. उसको एक साइनर की पब्लिक की से हम साइनर, जैसे साइनर ने प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया था, फिर साइनर की पब्लिक की से वो वेरीफाई होगा. ठीक है. देन अगेन यू आर गेटिंग द हैश वैल्यू. हैश वैल्यू यहाँ से जो आ रही है और यहाँ से जो जा रही है दोनों को वेरीफाई करेगा. अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो मीन डेटा इज ऑथेंटिकेटेड. जो मैसेज है वो हैश वैल्यू के बराबर आना चाहिए. अगर वो मैच कर जाता है तो डेटा इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट. ठीक है. अगर नहीं होता है तो वो नहीं है. सो फॉलोइंग पॉइंट्स में गेट इनटू नॉलेज फॉर द you can say for the process, like each person adopting this scheme has a public private key pair. So जो भी पर्सन इस सिस्टम को अडॉप्ट करेगा उसके पास पब्लिक एंड प्राइवेट की पेयर्स होने चाहिए. Generally, the key pairs used for the encryption oblique decryption and signing oblique verifying are different. So the private key used for signing, that is referred to as a signature key. वही हमने आपको बताया था कि प्राइवेट की से हम उसको एनक्रिप्ट करते हैं इन सेंडर साइड पे, and we are using the public key as the verification key on the receiver side. Clear? Signers feed data to the hash function. ये पूरा इसी का वर्किंग दिया हुआ है. तो साइनर पहले क्या करता है, डेटा फीड करता है हैश फंक्शन को. हैश फंक्शन आप सभी को पता है, व्हाट इज हैश फंक्शन. हेलो, एनीवन हैव एनी डाउट? ओके. तो साइनर पहले क्या करता है, साइनर हैश फंक्शन के ऊपर डेटा को अप्लाई करता है. देन वी आर गेटिंग द हैश वैल्यू. देख सकते हैं आप, हैश फंक्शन पे अप्लाई किया, हमको हैश वैल्यू मिल गई. क्लियर? इसके बाद क्या होता है इसमें, तो ये हैश ऑफ डेटा जब मिल गया हमें, तो हैश वैल्यू एंड सिग्नेचर की देन फेड टू द सिग्नेचर एल्गोरिथम.
जो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हैश वैल्यू है और सिग्नेचर की को, ये जो सिग्नेचर की हमारे पास या साइनर्स की आ रही है, इसको हम सिग्नेचर एल्गोरिथम पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और जब अप्लाई करेंगे, इच प्रोड्यूसेस द डिजिटल सिग्नेचर ऑन गिवन हैश, ये आपको डिजिटल सिग्नेचर दे देगा जो भी आपका हैश डेटा मिला है आपके पास। ये देखिए सिग्नेचर अप्लाई हो गया, दिस इज द डिजिटल सिग्नेचर ऑन द हैश डेटा, ठीक है। तो एक तरह से वो सिग्नेचर ही आपका एनक्रिप्ट हो गया, ठीक है ना, सिग्नेचर के थ्रू, ठीक है। सिग्नेचर इज अपेंड टू द डेटा एंड देन बोथ आर सेंड टू द वेरीफायर। सिग्नेचर उसके साथ अपेंड हो जाएगा, उसके बाद आपका डेटा और बोथ सिग्नेचर एक साथ आपका वेरीफायर को सेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर वेरीफायर क्या करेगा, फीड्स द डिजिटल सिग्नेचर एंड द वेरिफिकेशन की इनटू द वेरिफिकेशन एल्गोरिथम। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जो हमारा डेटा था और सिग्नेचर था, ये एग्जैक्टली वेरिफिकेशन एल्गोरिथम पे गया और हैशिंग फंक्शन पे गया, जिससे हमको हैश वैल्यू मिल रही है और हमको अपना डिक्रिप्ट करके डेटा मिल रहा है, ठीक है ना। फिर दोनों को वेरीफाई कराएगा। So for verification, this hash value and the data output of the verification algorithm are compared. Based on the comparison result, verifier decides whether the digital signature is valid or not. तो अगर वो वैलिड है तो इसका मतलब डेटा जो सेंडर ने भेजा वही हमको रिसीव हुआ है। अगर वो इनवैलिड आता है तो इसका मतलब डेटा कहीं ना कहीं डेटा के साथ स्पूफिंग हो गई है। Some Eve have just taken the data in between the path, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सिंस डिजिटल सिग्नेचर इज क्रिएटेड बाय प्राइवेट की ऑफ द साइनर्स एंड नो वन एल्स कैन हैव दिस की, ठीक है। तो जो भी हमारा डिजिटल सिग्नेचर है किसने किसके द्वारा क्रिएट होती है, प्राइवेट की से क्रिएट होती है ऑफ द साइनर, क्लियर, एंड नो वन एल्स कैन हैव दिस की, और किसी के पास नहीं होगी ये की, ठीक है ना। So the signer cannot repudiate signing the data in future. तो जो भी साइनर है वो repudiate नहीं कर सकता है signing on the data in future. Clear? So it should be noticed that instead of signing data directly by signing algorithm, usually hash of data हमारा use होता है, create होता है. Since the hash of data is unique representation of data, so it is sufficient to sign the hash in place of data. तो जो हम हैश की बात कर रहे हैं, हैश हमारा क्या है, हैश हमारा एक तरह से कह सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म या एनक्रिप्टेड या सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ डेटा है। हैश जो हमको मिलता है वो एग्जैक्टली डेटा को मोर सिक्योर कर देता है इनिशियली, क्लियर है वो भी डेटा, लेकिन वो जो डेटा है वो ज्यादा सिक्योर्ड है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेटा, हैश हैश वैल्यू जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा किस तरह से क्रिएट होता है, ये जब हम साइनिंग एल्गोरिथम के थ्रू हम इसको अचीव करते हैं, क्लियर। सिंस द हैश ऑफ डेटा इज यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, देखिए लाइन लिखी भी हुई है, सिंस द हैश ऑफ डेटा इज ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सो इट इज सफिशिएंट टू साइन द हैश इन प्लेस ऑफ डेटा, ठीक है। तो आप डेटा की जगह साइन करने की बजाय आप हैश को ही साइन कर सकते हैं, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ यूजिंग हैश इंस्टेड ऑफ डेटा डायरेक्टली फॉर साइनिंग इज एफिशिएंसी ऑफ द स्कीम। जैसा कि मैंने बताया एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, तो वही एक मेन रीजन है इसके पीछे कि टू improve the efficiency we just uses hash data, clear, instead of normal data. So let us assume RSA algorithm आप लोगों ने पढ़ी है, राइविस समीर एंड एडलमंड, which is used as the signing algorithm here. So signing large data through modular exponentiation is computationally expensive and time consuming. Clear? So the hash of the data is relatively small digest of the data. हैश हमारा ये भी फायदेमंद होता है कि जैसे हमारा जो एक तरह से कह सकते हैं सिक्योरिटी जो हम हैश को दे रहे हैं वो कॉम्पैक्ट ऑफ डेटा क्रिएट कर रहा है,
ये लार्ज डेटा जो हमारा है उसको कॉम्पैक्ट बना देता है, ठीक है। इससे क्या है, डेटा की प्रोसेसिंग में भी कम टाइम लगता है, डेटा के स्पूफिंग के चांस भी हमारे बहुत कम हो जाते हैं। साइनिंग ए हैश इज मोर एफिशिएंट देन साइनिंग द एंटायर डेटा। ये लाइन देखिए हाईलाइट होकर लिखी हुई है कि हम एक हैश को जो साइन करते हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू द एंटायर डेटा। सो इम्पोर्टेंस ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर की बात करें हम, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। So out of all cryptographic primitives, the digital signature uses public key cryptography that is considered as very important and useful to achieve information security. ठीक है? So apart from ability to provide non-repudiation of messages, ठीक है? The digital signature also provides message authentication and data integrity. So let us briefly see how this is achieved by the digital signature. Yeah. So if you see, we have three processes in cryptography. You all know, like message authentication, data integrity, and non-repudiation. These are the three target points which we need to achieve through the you can say this cryptographic scheme. Clear? Okay. So now initially, if we talk about the message authentication. So when the verifier validates the digital signature using public key of the sender, so he is assured that signature has been created only by sender who possesses the corresponding secret private key and no one else. So authentication में यही है, जो वेरीफायर होता है वो डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कैसे करता है, पब्लिक की ऑफ द सेंडर से। जो सेंडर की पब्लिक की होगी उससे वेरीफाई करेगा। तो अगर वो मैसेज सुनिश्चित करता है कि ये सेंडर ने ही क्रिएट किया है या किसी और ने क्रिएट किया है, ठीक है। तो वो प्राइवेट की के थ्रू उसको वेरीफाई करता है, ठीक है ना। दिस इज योर मैसेज ऑथेंटिकेशन। दूसरा डेटा इंटीग्रिटी। So you all know, in case of an attacker has access to the data and modifies it, so the digital signature verification at the receiver and fails. So the hash of the modified data and the output provided by the verification algorithm will not match. इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई हैकर या अटैकर बीच में एक्सेस करता है और डेटा को मॉडिफाई कर देता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, सो तो डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन हमारा रिसीवर पे फेल हो जाएगा उस केस में, अगर मॉडिफाई हो जाता है डेटा। सो कि वो अपना खुद का सिग्नेचर क्रिएट कर देगा जो भी हमारा हैकर, ठीक है। सो हैश ऑफ मॉडिफाइड डेटा एंड द आउटपुट प्रोवाइडेड बाय द वेरिफिकेशन एल्गोरिथम विल नॉट मैच। तो उस केस में हैश और मॉडिफाइड डेटा की वजह से हमारा वेरिफिकेशन एल्गोरिथम से मैच नहीं करेगा। सो उस केस में रिसीवर सेफली डिनाई कर देगा फॉर मैसेज assuming that the data integrity has been lost या breached. Clear? इसके बाद हम बात करते हैं नॉन रेप्यूटेशन की। So non-repudiation, it is assumed that only the signer has the knowledge of the signature key. Clear? क्योंकि जो भी हमारा इंक्रिप्शन में इनक्रिप्ट मैसेज हो रहा है या जो मैसेज हमारा ट्रांसमिट हो रहा है डेटा, उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ किसको होती है, साइनर को होती है। तो साइनर्स की के थ्रू उसको इनक्रिप्ट करते हैं। तो he can also only created unique signature on a given data. So thus the receiver can present data and the digital signature to a third party as an evidence. So we can say if any dispute arises in the future, yeah, so by adding with public key and encryption to the digital signature scheme, we can create a crypto system that can provide the four essential elements of security, namely privacy, authentication, integrity, and non-repudiation. Clear? Now, if you see how we achieve the encryption with a digital signature, clear? So you can see.
So in many digital communication, it is desirable to exchange in an encrypted message than plain text message to achieve confidentiality. You all know, in public key encryption scheme, a public encryption key of the sender is available in open domain. Yeah, and hence anyone can spoof his identity and send any encrypted message to the receiver. Clear? So which makes it essential for the user employing PKC for the encryption. Clear? That is public key cryptography, for the encryption to see digital signature along with the encrypted data. Clear? To be assured of message authentication and non-repudiation. So दो पॉसिबिलिटी होती हैं, एक तो होता है कि हम डिजिटल सिग्नेचर को इंक्रिप्शन स्कीम से कैसे अटैच कर सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी है, पहला है साइन करेंगे फिर उसके बाद उसको एनक्रिप्ट करेंगे, दूसरा एनक्रिप्ट करेंगे फिर साइन करेंगे। तो दोनों मेथड में जो हमारा सेकेंड मेथड है दैट इज मोर सुटेबल, मींस एनक्रिप्ट देन साइन। क्लियर? दैट इज मोर रिलायबल एंड वाइडली अडॉप्टेड। सो ये आप एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो यू हैव ए सेंडर साइड, सेंडर के पास डेटा है, डेटा को उसने एनक्रिप्ट किया है। ठीक है, इनक्रिप्ट करने के लिए उसने रिसीवर्स की पब्लिक की को यूज किया है। देन वी आर गेटिंग द एनक्रिप्टेड डेटा ओवर हियर, यू कैन सी। क्लियर? और यहाँ नीचे देख सकते हैं, इसी पे जब हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया, जो हमारे पास एनक्रिप्टेड डेटा था, तो हमको हैश वैल्यू मिल गई। हैश वैल्यू को फिर हमने डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई किया उस पर विद सेंडर्स प्राइवेट की, देन वी आर गेटिंग द डिजिटल सिग्नेचर। और यहाँ से एनक्रिप्टेड डेटा ऊपर से आ रहा था, तो दोनों में मिल गया, एनक्रिप्टेड डेटा प्लस डिजिटल सिग्नेचर। We can say the data is appended to the digital signature. Yeah. So this may be ये आपको transmit हो जाएगा. So the receiver, after receiving the encrypted data and signature on it, first verifies the signature using sender's public key. जो भी receiver होगा, जब भी उसको receive होगा encrypted data and signature on it, so it verifies the signature using sender's public key. After ensuring clear the validity of the signature, he then retrieves the data through, you can say, decryption using private key. Clear? Now, so this is exactly about the digital signature cryptography. I think the concept may get clear to all of you. Concept को समझ में आया ये class? Okay. Okay, you all are also requested to mark your attendance as well in this lecture. Yes. So, so now we just start with the another topic, that is the hash function. So I'm just sharing you the file. Just we have the file now regarding the hash function. Yeah. Just wait. I'm just sharing you the file. Okay, so if you see, we have another file assigned within after this lecture. So if you see, we have now the cryptography. Basically, that is just a signature with the hash function. So in this topic, we will discuss exactly the hash function. Yeah. So if you see how the authentication code, that is एक आपका टर्म है मैक। मैक आप लोगों ने सुना होगा। मैक होता है मैसेज एक्सेस, सॉरी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ये क्या होता है? ये एग्जैक्टली सिमेट्रिक की से हमको मिलता है, दैट इज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी से हमको मिलता है, यू कैन से। तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी आप लोग को पता है क्या होता है, जैसे जो मैक एड्रेस होता है वो ज्यादा सिक्योर्ड होता है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर बीच से अगर कोई इसको स्पूफ करना चाहे तो स्पूफ नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? क्योंकि वी आर जस्ट क्रिएटेड ए मैक एड्रेस। क्लियर? सो एलिस है, एलिस अगर बॉब को कम्युनिकेट करना चाहती है तो पहले तो एक मैक एड्रेस क्रिएट होगा,
मैक एड्रेस पे की अप्लाई होगा. You can see the key is applied on this. Clear? So की अप्लाई होने के बाद हमारा जो मैसेज है वो आगे वेरीफाई होने के लिए जाएगा रिसीवर एंड पे. क्लियर? उसके बाद हमारा जो है देख सकते हैं बॉब एंड पे क्या होगा, सेम की हमारी अप्लाई होगी उस मैक एड्रेस पे, जिससे वो एड्रेस मैसेज हमारा वेरीफाई होगा. तो मैक हमारा क्या होता है, मैक में स्पूफिंग नहीं हो पाती. क्लियर? मैक हमारा एक ऐसा एड्रेस होता है जिसपे हम स्मूथिंग करना आसान नहीं होता है. ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें बात करें, देख लें आप यहाँ देख सकते हैं इमेज ड्रॉपर ने बीच में इसको स्पूफ करने की कोशिश करी. तो अगर वो स्पूफ करता है तो यहाँ मैक चूंकि वेरीफाई होता है सेम की से, अगर मैसेज चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे इसको पता चल जाएगा. तो सेम मैक एड्रेस रिसीव नहीं होगा. ठीक है ना. तो सिग्नेचर वर्सेस मैक क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्नेचर वर्सेस मैक? यू कैन सी सिग्नेचर, अभी मैंने आपको बताया था कि सिग्नेचर क्या होता है. ठीक है. कोई बताएगा सिग्नेचर में हमने क्या अभी एक्सप्लेन किया था? हेलो, अभी डिजिटल सिग्नेचर मैंने आप लोग को बताया था. कैन एनीवन एक्सप्लेन? हेलो, एनीवन एक्सप्लेन? क्लास, कैन एनीवन एक्सप्लेन? आपके सामने लिखा हुआ है तब भी आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. बताइए. भी मैंने समझाया भी था आप लोग को. ओके चलिए. सो मैक की अगर हम बात करें तो मैक हमारा क्या होता है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड होता है. अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, जो कि डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है. दिस इज द मेजर एडवांटेज विद द मैक, दैट इज मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड व्हिच प्रिजर्व द डेटा इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी आप सभी को पता है, इंटीग्रिटी लॉस होने से मतलब मैसेज आपका लॉस हो गया. एग्जैक्टली कह सकते हैं आप. ठीक है ना. अगर मैसेज आपका किसी ने स्पूफ कर लिया और उसको मॉडिफाई कर दिया, इट मींस द इंटीग्रिटी इज लॉस्ट. So it exactly ensures that creation and any change of the message have been made by authorized entities. Yes. So only the authorized entities can check a match. Clear? केवल जो authorized entities हैं, जिनको authorization मिला हुआ है, वही क्या कर सकते हैं, मैक को चेक कर सकते हैं. एंड ऑल्सो हु कैन चेक कैन ऑल्सो चेंज द डेटा. जो चेक कर सकता है वो डेटा को चेंज भी कर सकता है. nobody else. Yeah. So in most legally interesting cases, if you want to be able to verify that one single individual wrote something, yeah. So also in many situations it is good if everyone is able to check the signature. एक तरह से कह सकते हैं ब्रॉडकास्ट मैसेज अगर है, everyone can check their message clear at any time. डिजिटल सिग्नेचर अभी हमने आपको बताया था, ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बेस्ड बेसिकली रहता है, जिसमें हम लोग एसिमेट्रिक साइफर्स की हमने आपको बताया था. दिस इज ए टाइप ऑफ एसिमेट्रिक साइफर. तो one single individual holds the private key while the other holds the public key. So if you encrypt with the private key, send both cryptogram and message, so anyone can check that decryption with the public key or does indeed created the message. Okay? So note that some public key system do not allow encryption with the private key. Yeah. So most subsystems can be modified to generate and verify signatures. Yeah. Now,
So if you see then how a digital signature can be created using the asymmetric cryptography. So you can see it is used to prevent E from creating messages and present them as written by of Alice. Clear? So so we have a देख सकते हैं यहाँ पे we have Alice, then it is just having the it is just creating a signature that is privately signed by the key. Exactly, private key यूज कर रहे हैं साइनर के थ्रू जो उसको क्रिएट कर रहा है या उस पर अप्लाई हो रहा है, then it is transmitted. Clear? And this signature is verified with the public verification key to anyone. जितने लोगों को भी शेयर हो रहा है वो सब पब्लिक की से उसको वेरीफाई करेंगे. And if the message is message is not spoofed or any changes may not happen, so it is verified. It will verify. Otherwise, it will just deny the receiving of the message. Yeah. So digital signature should not only be tied to the signer's user, but also to the message. The example of encrypting with the private key does this. So only Alice can create it, and it is valid only if the decryption and the plain text coincide. So no attempt is made to hide the information unless it is encrypted using another method. Clear? ये आपका कुछ RSA बेस्ड सिग्नेचर एल्गोरिथम है. RSA एल्गोरिथम आपको पता है, उसको फॉलो किया गया डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर. That is applied to achieve the that algorithm is applied to achieve the digital signature method for the encryption basically. So you can see Alice exactly set up RSA as usual. Clear? So in order to sign a message M, एक हमारे पास मैसेज M है, इस पे Alice क्या कर रहा है? Alice प्राइवेट की यूज कर रहा है, that is D, small d. तो ये आपकी बाव की प्राइवेट की नहीं है, ध्यान रखिएगा. अपनी खुद की की से उसको एनक्रिप्ट कर रहा है, कर रही है मैसेज को. तो देख सकते हैं टू क्रिएट द सिग्नेचर क्रिएट करने के, तो उसने एस मिस हो गया सिग्नेचर. सिग्नेचर इज इक्वल टू मैसेज की पावर डी. डी आपका क्या है? की का काम कर रहा है. डी इज द प्राइवेट की, एम इज द मैसेज, एंड मॉड एन. क्लियर? देन एलिस नाउ गिव्स बोथ एम एंड एस टू बॉब. अब जो हमारे पास ये एम है मैसेज है, और ये जो सिग्नेचर है, ये दोनों ही एक साथ हमारा अपेंड होने के बाद, ठीक है, बॉब की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा. क्लियर? तो बॉब क्या करेगा? बॉब उस पब्लिक की यूज करेगा एलिस का. एलिस की पब्लिक की यूज करेगा. पहले इंक्रिप्शन में एलिस की प्राइवेट की यूज हो रही थी, ये ध्यान रखिएगा. पहले हम लोग प्राइवेट की यूज कर रहे थे, दैट इज डी. अब उसको डिक्रिप्ट करने के लिए वो एलिस की पब्लिक की को यूज करेगा वेरीफाई करने के लिए द सिग्नेचर बाय कंपेयरिंग. तो अब हमें देख सकते हैं, अब ये जो सिग्नेचर था ये और मैसेज हमारा ट्रांसमिट हुआ था, इसको डिक्रिप्ट जब करेगा तो मैसेज हमको यहाँ मिल गया, अलग हो गया मैसेज डिक्रिप्ट करने के बाद. और एंड एस की पावर ई, मतलब सिग्नेचर पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? डिक्रिप्शन अप्लाई करेंगे. ठीक है, एस ई मॉड एन हो गया. ठीक है ना? सो इस पे भी अटैक्स हो जाते हैं. हाउ वी गेट द अटैक्स ऑन द RSA signatures. So any you want to sign another message ME so that it seems to be from Alice. Yeah? So जो भी ईव होगा वो क्या करेगा? ये साइन करना चाहता है दूसरे मैसेज को, that is ME, so that it seems to be from Alice, जिससे ये ऐसा लगेगा कि एलिस ने ही भेजा है. ठीक है? So Eve cannot generate a signature directly because he does not have the secret key D. ईव के पास चूंकि कोई की तो है नहीं सीक्रेट की, तो वो मैसेज को डायरेक्टली जनरेट नहीं कर सकते सिग्नेचर के थ्रू. तो शी वुड ट्राई टू चूज एसी फर्स्ट एंड कैलकुलेट. पहले तो एक एसी चूज करेगा. देख सकते हैं आप, एम ई इज इक्वल टू एस ई पावर ई मॉड एन. ये हमारा ईव के थ्रू यूज हो गया. ठीक है, बट इट इज अनलाइकली दैट एस ई
is a meaningful message. ये एक अनलाइकली है कि ये हमारा एक मीनिंगफुल मैसेज है. So two message signature pairs gives away a third sense. So you यहाँ देख सकते हैं we have a M1 M2 clear. E power D is equal to M1 की power D M2 की power D mod N. Then we have a blind RSA signature. So you can see the variation using a blind RSA signature that may also done here. Okay. So Bob want to exactly prove that he has created a document at a certain time, but keep it secret. And Alice agrees to help him. So she gets up standard RSA, keeping T for herself. Clear? So Bob chooses a random integer k and gives Alice the message. So देख सकते हैं इसके लिए हम लोग t is equal to k की power e m mod n. ये हमारा एल्गोरिथम का पार्ट हो गया. The number t is exactly random to Alice. ये जो t नंबर है ये रैंडम है Alice के लिए, लेकिन वो साइन करती है the message and gives the signature to the Bob. Clear? So s is equal to t की power d is equal to t की power d करेंगे तो इस पे अप्लाई हो जाएगा. तो t हमारा चूंकि ये है इसकी पावर d करेंगे तो k की पावर e d आ जाएगा m की पावर d. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इंटू m की पावर d mod n. ठीक है. So Bob can now divide by k and receive m की पावर d. So अगर इसको Bob को चाहिए तो क्या करेगा, k से डिवाइड कर देगा, तो हमको ये m की पावर d mod n मिल जाएगा. ठीक है, ये देख सकते हैं. ठीक है. और इसके बाद ये सब हमारे एल्गोरिथम का पार्ट है. LKML signatures is also the part of this. फिर हम बात करते हैं हमें हैशिंग की नीड क्यों पड़ी. भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई वी नीड हैशिंग. So you know, unfortunately, all known signature algorithm like RSA, LKML, and so many other things are very slow. So also all known signature algorithm generate output with the same size as the input. Clear? ये सारे मतलब हमारे रिक्वायरमेंट हैं जिसकी वजह से हमें इसकी जरूरत पड़ी. Then third point is therefore it is much better to shorten hash the message first and assign to the short hash. ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम हैश के थ्रू मैसेज को शॉर्ट कर देते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग लेंथ मैसेज फॉर द इनक्रिप्शन. ये बहुत बड़ा फायदा है. जैसे आप देख सकते हैं m sin m जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, जब हैश इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m sin और h आ गया. h का मतलब हैश, ये हैश डेटा हो गया ना. तो ये टिपिकल हैश फंक्शन हैज एग्जैक्टली 160 to 512 बिट्स आउटपुट. ठीक है, सभी को मेरी आवाज आ रही है. हेलो, क्या आवाज आ रही सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो okay, so now I am going to share you the file. ठीक है, तो ये सारा हमारा हैश का ही पार्ट है. so these all things are related to the hash function exactly. तो सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, we have one way hash function is also there, so you can see, and then we have security of signing a message hash. So if you talk about the security, so suppose that any Eve has seen the pair, like कोई Eve है जिसने इस मैसेज को देख लिया जो कि कम्युनिकेट हो रहा है and want to sign her own message ME. So this is easy if hash of ME is equal to hash of this message. Clear? So therefore good hash functions should make it difficult to give M find message ME so that hash of ME is equal to hash of M. So this is the reason to use a weakly collision free hash function. Clear? So
weakly collision V hash function. ये हमारा प्लॉट है. Now so so what are the ये बहुत important point है. What are the desirable properties of a practical hash function? Okay. So कुछ desirable properties हैं इसकी hash function की. किसी पहला है the transforming okay, पहला point है transformation of the message of any length. Clear? Fixed length block. So this is a very important point कि जो भी हमारा मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसी भी लेंथ का वो फिक्स लेंथ ब्लॉक. सेकंड है डिपेंडेंस ऑन एवरी बिट ऑफ मैसेज. तो हर एक बिट के मैसेज से उसकी डिपेंडेंसी रहती है. Everyone should be able to check the validity of a hash of a message. कोई भी वैलिडिटी को चेक कर सकता है हैश मैसेज की. And the fourth point is you could still use a secret parameter, but this message you restrict the group of people that can verify to the group that knows the secret. These are some desirable properties of the practical hash function. Okay, so today's lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया hash values, hash function क्या होता है, थोड़ा डिजिटल सिग्नेचर के बारे में डिस्कस किया. Okay, so now I'm going to तो अब हम लोग यहाँ पे लेक्चर को एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो आई एम जस्ट आई थिंक इट इज असाइन्ड टू ऑल ऑफ यू नाउ. हेलो, it is assigned to all of you now. Thank you class and do it within time. Okay.